है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़े एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज़, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर न कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़े एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज़, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर न कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़े एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज़, कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर।
गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हों, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़े एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हों, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़े एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहाँ पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का।
مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ جب ہم بات کرتے ہیں گھر کی تو گھر کیسا ہونا چاہیے؟ جہاں سکون ہو، اطمینان ہو، خوبصورت زندگی اور حسین نظارے ہوں، ہریالی ہو، درخت ہوں، جہاں کی فضا میں تازگی کا احساس ہو، ایسی بہترین اور صحت مند زندگی ہو جہاں آپ اور آپ کے بچے پرسکون اور محفوظ ہوں۔ تو ایک ایسے ہی گھر کی تعبیر ہے گل مہر سٹی، ایک ایسا تعمیراتی منصوبہ جس سے جڑا ہے کراچی شہر کا مستقبل۔ کراچی M9 موٹر وے کی پرائم لوکیشن پر واقع ایک روڈ فیسنگ پروجیکٹ، ایک گیٹڈ کمیونٹی جو ہر طرح سے محفوظ ہے، ویل پلانڈ روڈ نیٹ ورک، 24 گھنٹے سیکیورٹی اور سرویلنس، جہاں پر پارکس، پلے گراؤنڈز، ایڈونچر تھیم پارک، زو، ڈے اینڈ نائٹ جنگل سفاری۔ اس کے علاوہ سکولز، کالج، یونیورسٹی، ہاسپٹل، کمیونٹی سینٹرز، کمرشل ایونیوز، کیفیز، ریسٹورانٹ، آڈیٹوریم، سینما، سپر مارکیٹس، شاپنگ مال اور سپورٹس کمپلیکس بھی، لگژری ہائی اینڈ اپارٹمنٹس، پریمیم ولاز، اسٹیٹ آف دی آرٹس ہل ریزورٹس اور فارم ہاؤسز جو کہ ڈیزائن کیے گئے ہیں ماڈرن آرکیٹیکچر پر۔ گل مہر سٹی متعارف کروا رہا ہے کراچی میں پہلی بار ہل گولف کلب، ہارس رائڈنگ کلب، واٹر پارک، لیک اور بہت کچھ۔ یہ سب امینٹیز اس پروجیکٹ کو بہت منفرد بناتی ہیں۔ سیون ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے منظور شدہ ایک قابل اعتماد پروجیکٹ جس کا لے آؤٹ پلان اور ڈیزائن بنایا ہے ماہر آرکیٹیکٹس نے۔ ویل پلان انفراسٹرکچر جہاں پر بجلی، پانی اور سیوریج کا ایک خودکار نظام موجود ہے، اور سب سے مزے کی بات، اتنی زیادہ سہولیات ہونے کے باوجود اس کی قیمت ایک عام آدمی کی پہنچ میں ہے۔ اس کی سائٹ وزٹ کریں جہاں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے۔ تو پھر دیر نہ کیجیے، آج ہی اپنے پلاٹ کی بکنگ کروائیے، ایک ایسی محفوظ سرمایہ کاری جو وعدہ ہے آپ کے بہترین مستقبل کا۔ مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ جب ہم بات کرتے ہیں گھر کی تو گھر کیسا ہونا چاہیے؟ جہاں سکون ہو، اطمینان ہو، خوبصورت زندگی اور حسین نظارے ہوں، ہریالی ہو، درخت ہوں، جہاں کی فضا میں تازگی کا احساس ہو، ایسی بہترین اور صحت مند زندگی ہو جہاں آپ اور آپ کے بچے پرسکون اور محفوظ ہوں۔ تو ایک ایسے ہی گھر کی تعبیر ہے گل مہر سٹی، ایک ایسا تعمیراتی منصوبہ جس سے جڑا ہے کراچی شہر کا مستقبل۔ کراچی M9 موٹر وے کی پرائم لوکیشن پر واقع ایک روڈ فیسنگ پروجیکٹ، ایک گیٹڈ کمیونٹی جو ہر طرح سے محفوظ ہے، ویل پلانڈ روڈ نیٹ ورک، 24 گھنٹے سیکیورٹی اور سرویلنس، جہاں پر پارکس، پلے گراؤنڈز، ایڈونچر تھیم پارک، زو، ڈے اینڈ نائٹ جنگل سفاری۔ اس کے علاوہ سکولز، کالج، یونیورسٹی، ہاسپٹل، کمیونٹی سینٹرز، کمرشل ایونیوز، کیفیز، ریسٹورانٹ، آڈیٹوریم، سینما، سپر مارکیٹس، شاپنگ مال اور سپورٹس کمپلیکس بھی، لگژری ہائی اینڈ اپارٹمنٹس، پریمیم ولاز، اسٹیٹ آف دی آرٹس ہل ریزورٹس اور فارم ہاؤسز جو کہ ڈیزائن کیے گئے ہیں ماڈرن آرکیٹیکچر پر۔ گل مہر سٹی متعارف کروا رہا ہے کراچی میں پہلی بار ہل گولف کلب، ہارس رائڈنگ کلب، واٹر پارک، لیک اور بہت کچھ۔ یہ سب امینٹیز اس پروجیکٹ کو بہت منفرد بناتی ہیں۔ سیون ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے منظور شدہ ایک قابل اعتماد پروجیکٹ جس کا لے آؤٹ پلان اور ڈیزائن بنایا ہے ماہر آرکیٹیکٹس نے۔ ویل پلانڈ انفراسٹرکچر جہاں پر بجلی، پانی اور سیوریج کا ایک خودکار نظام موجود ہے، اور سب سے مزے کی بات، اتنی زیادہ سہولیات ہونے کے باوجود اس کی قیمت ایک عام آدمی کی پہنچ میں ہے۔ اس کی سائٹ وزٹ کریں جہاں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے۔ تو پھر دیر نہ کیجیے، آج ہی اپنے پلاٹ کی بکنگ کروائیے، ایک ایسی محفوظ سرمایہ کاری جو وعدہ ہے آپ کے بہترین مستقبل کا۔ مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ جب ہم بات کرتے ہیں گھر کی تو گھر کیسا ہونا چاہیے؟ جہاں سکون ہو، اطمینان ہو، خوبصورت زندگی اور حسین نظارے ہوں، ہریالی ہو، درخت ہوں، جہاں کی فضا میں تازگی کا احساس ہو، ایسی بہترین اور صحت مند زندگی ہو جہاں آپ اور آپ کے بچے پرسکون اور محفوظ ہوں۔ تو ایک ایسے ہی گھر کی تعبیر ہے گل مہر سٹی، ایک ایسا تعمیراتی منصوبہ جس سے جڑا ہے کراچی شہر کا مستقبل۔ کراچی M9 موٹر وے کی پرائم لوکیشن پر واقع ایک روڈ فیسنگ پروجیکٹ، ایک گیٹڈ کمیونٹی جو ہر طرح سے محفوظ ہے، ویل پلانڈ روڈ نیٹ ورک،
24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विजिट करें जहां तरक्याती काम तेजी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विजिट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है।
सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विजिट करें, जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी Hello, Assalamu alaikum, and welcome from this beautiful green and picturesque Naya Nazabad Cricket Stadium. Tonight, it's the seventh game of Gulmohar City Presents Youth Friendship League. The two teams that are facing tonight are NJS Chargers and Cambridge Strikers. Cambridge Strikers earlier won the toss and they have decided to bat first. Remember, this is the third game for both sides. Both have lost one and won one in their previous matches of this group stage. NJS Chargers obviously winning a close competition in previous match at TMC grounds against Sumia Gladiators, whereas Cambridge Strikers also got their victory over Sumia Gladiators when they were defending a pretty modest total. Rizwan is going to take the new ball from the hill end, and Danish Rehan is going to be on strike to face first delivery. Big appeal, big appeal. Will the umpire give that one out? No. In fact, it has been given. What a start that is by an NGS Chargers. This was the first ball of the match, and Huzaifa Rizwan was on target from the very first delivery. Danish Rehan had absolutely no clue where the ball was going on that occasion and was judged out on the very first delivery of this match. So, what a start by NJS Chargers, and Cambridge Strikers have lost their first wicket of the very first ball for one. महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हों, जहाँ की फ़िज़ा में ताजगी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज। So Humayun Nadeem is on strike now. He's the new batsman, and what a start this is for NJS Chargers. They have got a wicket of the very first delivery in this over. Omar Taslim is going to face his first delivery of this match. And it's a good one. It's a very good delivery, and it's a very good drive on the offside as well. Just a single though. There is a fielder deep on the offside, the deep cover. The two fielders outside the 30-yard circle are third man and a fielder at extra cover. As I spoke, the fielder now is back into the circle. A slip has been taken for the fast bowler, and the mid off now goes down to long off.
Very good start this from for NJS Chargers. Saad Sultan is going to face his first delivery of this game, and it's a lovely delivery. It has moved out away. Big appeal from the umpire, but the umpire is unmoved. Cambridge Strikers are very much under pressure from this very first over of the game. The bowler there asking questions from the bowler. It was a full pitch delivery. It swung away from the batsman, and the batsman just was lucky enough not to get an outside edge. Saad Sultan living dangerously. What a start this is from Faiz Chaudhary, picking up a wicket of his very first delivery in this over. Nicely defended that. Two extra cover. No run. NJS Chargers won a very closely fought match previously, and they will be looking to carry on the winning momentum here in this match today as well. It's a big ground. The batsman will have to take extra risks to clear the boundaries here in this Nayan Azabad Cricket Stadium. Full toss, driven, no run. Faiz Chaudhary is making sure that he's bowling according to his field. Three fielders are inside the circle on the offside, and he's bowling round about fourth to fifth stump channel, moving the ball away. Last ball of the over coming up. This time it's a leading edge, straight to the fielder at point, no run. So after the end of the first over, Cambridge Strikers are 1 for 1. इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम अब मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी Share the new ball from the Gymkhana end now. Slow left arm bowler. Umar Taslim exposing his stumps. Starts off with a wide. It was very wide outside the off stump, and the batsman Umar Taslim just let that one go. This time it was into the stumps. Played towards the extra cover field. Slight misfield, but there won't be any single. Lucky for the bowler that he didn't go for many runs of that delivery. He's bowling it flat, not giving the air. This time pulled away straight to the field. In fact, it has gone between the long off and long on and has been stopped. Wonderful piece of fielding by the long on fielder. Just a couple on that occasion. Mid off is inside the circle. The long off is at the boundary. And there is deep square leg outside the 30-yard circle. Saad Sultan is now on strike. He's yet to get off the mark. This time cut away. Has he found the gap? Yes, he has. Will that go all the way for the boundary? The fielder is coming after it. Wonderful piece of fielding at the deep cover. Will they go for the third? There is a throw at the keeper's end. The batsman just completed their run. Wonderful piece of fielding at the deep by the fielder. It was short, it was cut away ferociously, and he was lucky to find the gap. The fielder was after it, he didn't give up the chase, and in the end managed to pull the bag just before time.
Faizan Shoaib, I think, is still bowling it too short. He needs to give the ball a bit air just to see whether there is any turn on the pitch. This time nicely defended back to the bowler. So NJS Chargers continuing their policy of bowling just one fast bowler and continuing the rest of their overs with the spinner. Dead ball signal by the umpire. The ball just slipped from the back of the hand. It happens when the ball is pretty shiny and hard and you're trying to grip the ball too tight just to get enough revolutions on the ball. It slips out of your hand. Flighted that, driven past the extra cover fielder. Will the fielder at long off chase that one? Brilliantly stopped. Just a single on that occasion. So far, we have seen good ground fielding on in this innings from NJS Chargers fielders. They are pretty pumped up. 7 runs of the over so far. Still 2 more balls to go. What can Faizan Shoaib do? This time short. Straight to the mid off fielder. No run. After the end of the 2 overs, Cambridge Strikers are 8 for 1. रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। So a cautious start this from Cambridge Strikers, especially when they have lost their first wicket in the first over. Faiz Chaudhary starts off with the wide. Yes, given by the umpire. It was too wide outside the off stump. The batsman also didn't attempt any shot on that delivery. It was pretty wide. It was Ramiz Baghpati who opened the bowling with the new ball in the previous match. This time it's Faiz Chaudhary. Saad Sultan. Full toss. Hit on the onside. Has he found the gap? Yes. Will the fielder cut that one off? No, the ball will win the race. Wonderful shot that is from the batsman. It was a full toss. The batsman saw the length early, came down the track and hit it past the fielder at mid wicket. The fielder gave the valiant attempt, but the ball won the race in the end. Good shot that by the batsman. First boundary to Saad Sultan now. The score moves on to 13 for 1. This time defended to the point fielder. No run. It's a big ground, so the batting side will have to make sure that they utilize the batting power play, because the boundaries will be difficult to come at the later stages of the innings, especially when the ball will get old. This time it's a wonderful delivery. Almost knocked the batsman over. There is a slight fumble at the point position, and the batsman will scramble back for 1 run. It was a very good delivery, not so good effort by the fielder at point. It was full, it was swinging away. The batsman managed to get the bat on the ball just at the right moment, otherwise, that would have crashed onto his pads. And it would have been the second wicket for Faiz Chaudhary, who is bowling some really good outswing bowling. Umar Taslim now is back on strike. Faiz Chaudhary now adjusting the field. The
extra cover fielder now goes to the boundary. The slip moves to the point position. Third man is outside the 30-yard circle. Mid off and mid on both inside the circle. This time he's tabbed it down to third man just for a single. It was a risky shot. I don't think the ball was that short. And if the ball would not have hit the bat, it might have hit his stumps. The score moves on to 15 for 1. Still two more deliveries left in the over. Decent start this from the Cambridge strikers, considering the fact that Faiz Chaudhary has been able to extract some swing under lights. As we all know, white ball does swing a bit more than the red ball, especially under the floodlights. Down the wicket he comes. This time plays towards the extra cover field line. Has it taken? Is it taken? Yes, I think it is. The second wicket down now for Cambridge strikers. Saad Sultan dismissed for 6. And the score goes to 15 for 2. This time he came down the track, tried to hit over the fielder. And the fielder took a good low catch, diving forward. Wonderful piece of fielding by Yaya Rizwan out there. He judged that catch to perfection. Saad Sultan dismissed for just 6. And Cambridge strikers are 15 for 2 and in big trouble. अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुंच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहां तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। Lost their second wicket. Faiz Chaudhary is on a roll. He has picked up his second wickets in his very second over. What a spell this is from him. Coming down the track. Will he get the single? No. Good piece of fielding. They are maintaining that pressure on the batting side. The NJS Chargers. Score after 3 overs is 15 for 2. फैमिली एक पुरफजा मुकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, HD और SBCA से मंजूर शुदा सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची में कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट वो विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइट पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए, आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं। Rizwan is going to continue with his second over from the Gymkhana end. Faiz Chaudhary has been exceptional with the new ball, finding that out swing on regular basis. First over, in fact, this is for Huzaifar Rizwan. Off spinner. Play toward the mid-wicket field and no run. Good start this.
The batsman will be under pressure, especially after losing 2 wickets inside the batting power play. What a delivery that is. He beat the batsman all ends up. The batsman had no clue whether the ball is going to turn back in or it's going to stay straight. Umar Taslim living dangerously. This time again, played straight to the bowler. Good start. His bowling is being appreciated by the fielders. No runs so far in this over. This time plays towards the offside. The fielder at cover completes the fielding. No run taken. So 4 dot balls in the over. What can the batsman do? Can he break the shackles? Can he go for those lofted shots and get a boundary? The bowler is asking for the towel. Seems there is a bit of dew here. This time it's short. Played towards mid wicket. No run. Good over this from Muzaffar Rizwan. Can it turn out to be a maiden? The first maiden of the game. Not a good start this from Cambridge Strikers. Nicely bowled, nicely bowled, easily defended to the bowler. What a start this is from Muzaffar Rizwan. He starts off with a maiden. The score remains 15 for 2 after 4. जब हम बात करते हैं घर की तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताजगी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर। Bowler. The score is 15 for 2 after 4 overs. Faiz Chaudhary is continuing with his third over. Plays towards the cover field and no run. Faiz Chaudhary is bowling his third over on the trot. Good decision by the captain. If he can get one more wicket, especially in this power play, then there will be more pressure on Cambridge Strikers. And they can easily restrict the batting side to a modest total then. Omar Lohia is the new batsman. Flicked it down to the fine leg fielder. Misfield, and this will result in a boundary. Welcome boundary to the batting side. It was not a good delivery. He was straying onto the bats and it was nicely played fine of the fielder at short fine leg. There was a slight fumble. There should have been a better effort in that position. The score moves from 19 for 2. This time full toss played towards the mid-off fielder. Wonderful piece of timing. Will that go all the way for 4? The fielder at mid-off gives the chase, but that goes in vain. Another boundary. 2 in a row for the batsman. This time a better shot even. Again it was full toss and he timed that to perfection towards the mid-on fielder, who gave up the chase pretty early, but then it was the mid-off fielder who went after that. But the ball was so well timed and the outfield is so lush and green, the ball just kept going away. Good over this for the Cambridge Strikers. Two boundaries so far. Still three more balls to go. Both boundaries coming off the bat from Umar Lohia. This time coming down the track, plays towards the offside.
Slight fumble. No run taken though. It happens on many occasions that opening bowler just bowl the first spell of 2 overs and then they come back later on in the innings. But Faiz Chaudhary is continuing his third over. Coming down the track again, the batsman this time plays towards the offside. No run taken. There we see again the fielder using their towels to dry the ball. The fielder at mid-on now goes to long on. Last ball coming up. Full toss again. Plays on the onside. And it's a slight misfield. Easy to this will be for the batting side. Good over comes to end for Cambridge Strikers. After 5 overs, the score moves on to 24 for 2. 25 for 2. Commercial avenues, cafes, restaurant, auditorium, cinema, supermarkets, shopping mall और sports complex भी. Luxury high-end apartments, premium villas, state-of-the-art hill resorts और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर. गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ. ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है. सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने. वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है. और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है. इसकी साइट विजिट करें जहां तरक्कियाती काम तेजी से जारी है. तो फिर देर न Faizan Shoaib is going to continue from the Gymkhana end for his second over. Slow left armers. This time it's shortcut away. The fielder at extra cover fielded that. No run taken. Nicely defended that. Good run taken. Last over was a very fruitful one for the Cambridge Strikers. 10 runs came off it. 1 run so far in this over from Faizan Shoaib. This is last over of the batting power play. This time played towards the offside. No run taken. I think the captain from the fielding side will be very happy with the effort from his bowlers. So far they have managed to restrict the run rate under 6 and over. Nicely played towards the mid-off fielder. There is a throw at the keeper's end, but the batsman completed his run. Another single. Just 2 more balls left in this batting power play. The score is just 27 for 2. Umar Taslim is on strike. Can he utilize these 2 deliveries? There is a big gap on the onside. This time cut away. Will the fielder at mid-off chase that one? No. Wonderful shot that is toward the extra cover field position. Just as you were mentioning the last 2 balls of the batting power play, and he smashed that, found the gap between the extra cover and the mid-off fielder, and the ball just went away for 4. Good batting this. Umar Taslim needs to stay at the crease for a longer time if the batting side are looking to post a decent total. Last ball of the batting power play coming up. Faizan Shoaib. This time it's short again, cut again, but no timing on that occasion. Slight slip from the fielder at extra cover position. Let's hope he didn't injure himself. So the batting power play has been ended. The score is 31 for 2. और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएगा. मज़ीद तफसीलात आप
वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चर वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला। Just over 6 and over after the batting power play. The batting side has been restricted to some extent, although the bowling side would have loved to get two more wickets. This time driven to the point field and no run taken. His previous over was a maiden. Can he repeat that effort? The bowler, Huzaifar Rizwan. This time it's wide down the leg side, nicely collected by the wicketkeeper, as signaled by the umpire. So the field is wide and spread. Was he looking for man catching? It's against the spirit of the game. It's not an effort that will be appreciated by any of the playing sides today. The batsman at the non-striker's end will be watchful now. Driven down the ground to the long gone fielder. It'll just be a single. So the field is wide and spread. There is a fielder deep on the leg side, deep square leg, and the mid-wicket fielder is also outside the 30-yard circle. Long on and long off are back at the boundary. And then there is this extra cover fielder patrolling the boundary on the offside. No fielder at fine leg though. A bit risky, especially when the spinner is bowling and turning the ball back into the right-handed batsman. Change of angle from the bowler, this time coming around the wicket. Nicely tap it down to the mid-wicket fielder. No run taken. Slide from the bowler. Extra cover, point and short third man are inside the circle on the offside. So he'll be looking. This time swept away. Beautiful shot played. The fielder is giving the chase. Will he be able to stop it? Yes, the ball stops inside the boundary, but the batsman complete the 3 runs. There was a big gap between the fielder at square leg and there was no fielder at fine leg position. So the fielder had to cover a lot of distance to make sure that he stops the ball from crossing the boundary. 3 runs taken on that occasion. Nice thinkful batting from the batsman. This time coming down the track. Played towards deep mid-wicket. Just a single. Nice little partnership building up between the two batsmen. Especially after losing the 2 wickets in the very first 3 overs of the batting power play. Umar Taslim is on strike. Played down the ground. Just a single. A bit of long off fielder will cut that one off. So after the end of the 7th over, the score is 38 for 2. SD और SBCA से मंजूर शुदा सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची में कहना है कि हम दावा नहीं करते, अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार
साइड वो विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइड पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की जमानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम अब Change in the bowling from the Gymkhana end. Imran Chawla has been swept over deep mid wicket and that has gone all the way for six. What a shot that is! Good start from the bowler. He started off with the flighted delivery and the batsman was waiting for it. He played that slog sweep wide of the fielder at deep mid wicket, and the fielder at deep mid wicket or at long off had absolutely no chance of catching that one. This time again, will that be a second six in a row? Yes, it will be. What a shot! Complete carbon copy of the shot that he placed on the previous delivery. It was flighted again, and the batsman was waiting for it. He's a tall batsman, he's got long reach, and he deposited that over the mid wicket fielder for a huge six. So, after spending ample time at the crease, Umar Taslim now is taking his risks, and his risks are paying off. Two sixes of two deliveries to Imran Chawla. Imran Chawla bowled brilliantly in previous match. So far, he's under the pump. This time, cut away. Jasmine. Sharp turn that. And good bounce on that occasion, too. The, the wicketkeeper almost collected it from near his face. This time again, beating the outside edge. Nice bowling. Good comeback from the bowler after getting hit for two consecutive sixes of his very first two deliveries in the over. I still think he needs to adjust his length a bit, especially when there is turn in the pitch. There you go, the wrong gun. The batsman had no clue where the ball is going to go. आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। वो दरख्त हों जहाँ की फिजा में ताजगी। That Imran Chawla's first over. Huzaifar Rizwan is going to continue from the hill end. Umar Loya is on strike. Down the leg side. Rightly given by the umpire wide. So the bowling side is under a bit of pressure now, especially after those two sixes in the previous over. This time down the leg side again. There is no fielder at the fine leg. The keeper is giving the chase, and the ball stops. And the batsman easily crossed for 3 runs. Wide given by the umpire, so 4 extra runs are going to be added to the total. Not a good start this from Muzaffar Rizwan. So a good recovery this from the batting side, especially after losing those 2 wickets in the first 3 overs. Good partnership building up between Umar Taslim and Imran Loya. This time nicely played down to the deep mid wicket fielder. The batsman was looking for the second run, but Umar Taslim had other ideas. He wants to stake as much strike as possible against the spinners. He fancies his chances against the spinners to go for those big shots. Slight change in the field. There is a fielder now at fine leg.
Another fielder at deep square leg and deep mid wicket in place. This time played towards the deep mid wicket fielder again. Just a single. Zafar Rizwan is going to continue over the wicket to Umar Loya. Nicely driven. Slight fumble from the fielder at extra cover. The mid of long off fielder cuts that one off. Just going to be a single. Four boundaries and two maximum so far in this innings from Cambridge strikers. This time pulled that one away. Has he found the gap? No, the fielder at deep mid wicket will cut that one off. Just be a single. So he's varying his length and line to the batsman, not allowing the batsman to settle. Run rate now is over 6 and over. Coming down the track. Again driven past the fielder at extra cover. The fielder at cover will cut that one off. It's just going to be a single. The bowler continuously using that towel to dry that ball. Also drying up his hands. This time played down to long on for a huge maximum. Third six for Umar Taslim. What a shot that was. It was the last delivery of the over and he eyed that delivery. It was slow. It was a loopy half volley and the batsman was waiting for it and he timed that to perfection. The fielder at long on had absolutely no chance to cut that one off. So the end after the end of 9 overs, the score is 67 for 2. महफूज हों तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विला। Good partnership building between Umar Taslim and Imran Loya. Imran Chawla is going to continue for his second over from the Gymkhana end. He went for those two sixes in his first over. This time guided down to third man. The outfield is not that fast. The batsman completed their second run. And there is a slight fumble. The keeper didn't collect that throw. And there will be another single. So 3 runs will be added to the total. Poor effort this from the bowling side. After picking up 2 wickets earlier on, they have allowed the batsman to get settled and now giving away free runs. Imran Chawla having a look at his field. What are his wicket taking options? This time he goes for another sweep. There is an appeal for stumping. But the back foot of the batsman was inside the crease. That's the length where Imran Chawla needs to be. He needs to be a bit more short of the good length. Make the batsman reach to the pitch of the ball. This time tapped it.
The wicketkeeper is going to collect that. No run taken. Umar Taslim exposing all his stumps. This time he goes for a big shot. Will that be taken? I think that has crossed the boundary. Another maximum. It was wrong gun, and he picked that. His left hand came off the bat when he played that shot, so it wasn't timed that well, but it still carried all the way for 6. There you see. So Imran Chawla is proving to be really expensive in his spell. He went for 2 maximum in his first over and now has conceded another one in this over. Surely the bowling side captain will have to change the bowling now. He has relied too much on his spinners. This time cut away. And he has found the gap. The fielder at point is giving up the chase. The fielder at long off collects that one. 2 runs taken. Good batting this from Umar Taslim. Still think he hasn't found his line on length tonight. Imran Chawla. He has given away 24 runs and he's yet to complete his second over. Last ball coming up. Nicely guided down to third man. Good shot. The fielder at short third man giving up the chase. Fancy footwork there. 2 runs easily completed. So 10 overs gone. Cambridge Strikers are 80 for 2. स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन। Change in the bowling attack. The captain has brought himself in from the hill end. Leading edge. Luckily the ball landed away from the fielder at extra cover. Imran Loya. This time nicely played on the onside. The deep mid wicket fielder will cut that one off. The action of Saqib Bikhlas reminds us of that. Saeed Ajmal. Slow run up. High jump just near the umpire. And he also bowls those loopy off spinners, inducing the big shots from the batsman. Picked up the prize wicket in the previous match. Can he provide his team the breakthrough? This time bowls that one wide. Good shot played towards the offside. Just a single though. Umar Taslim is now settled on 48, just 2 runs away from his half century. Imran Loya has also supported him well at the other end. He has shown his aggression and calmness at the same time. Batsman not ready. Nicely defended. Imran Loya is more of a back foot player, whereas Umar Taslim is pretty confident in using his feet, coming down to track to the fielder, to the bowler. There you go again. Played that on the back foot towards the long off. Just a single.
I think they have paced their innings beautifully, the two batsmen out there. Initially, they were very watchful in the batting power play, especially when they lost those two early wickets. And after the power play has ended, they have scored freely. The singles are coming along, the big shots are coming along from the bat of Umar Taslim. He has scored 3 sixes so far in this innings. He's on strike now. He has cut that one away and has found the gap between the extra cover and the long off fielder. And it's going to be a boundary. Misfield on that occasion by the fielder at long off. And the 50 comes up for Umar Taslim. What a knock. What a knock that is. The fielder at long off thought he had cut that one off, but it went between his legs. And with that boundary, Umar Taslim has now completed his half century. The over comes to an end. Cambridge Strikers are 87 for 2. मुस्तकबिल का मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हों, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क। बॉलर कौन है यार बॉलर कौन? बिलाल शोएब नहीं है, ये कोई और है यार। Change in the bowling attack from the Gymkhana end. Bilal Shoaib is going to continue with his slow left armers. Came down the wicket. Played towards the long on and deep mid wicket. Will they come back for two? Good piece of running by the batsman. You can sense the pressure on the faces of the fielders. They are giving those ones and twos easily. And the batsmen, meanwhile, are also going for those big shots and getting those boundaries. This time again played on the leg side, in between the fielder at mid wicket and square leg, but this time the mid wicket fielder was pretty charged up and made sure that he doesn't give away those 2 runs. Just a single though. Cambridge Strikers will be hoping that Umar Taslim should stay there till the end so that they can end up with a huge total. This time cut away, nicely collected by the fielder at point. There is a throw at the keeper, and the batsman was back into the crease. No damage done. The fielding side still believes they are just 1 wicket away from getting the batting side under pressure. But I think Umar Taslim has been playing really well. He must be seeing the ball like the football out there. This time pulled away, straight to the mid long on fielder. Controlled aggression this from the batsman. Pretty one-dimensional attack this from the NJS Chargers. They still haven't used their second fast bowling option. Came down the track. Has he found the gap? Yes, he has. Wonderful shot this from Umar Loya. He came down the track, found the gap between the extra cover fielder and long off, and the long off fielder had absolutely no chance to cut that one off. Another boundary. So Bilal Shoaib also facing the heat. This time he bowled that slow. He saw the batsman charging down the track.
adjusted his length, adjusted his pace so that the batsman could not go for that big shot. So the after end of the 12th over, the score is 96 for 2. 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब अम्यूनिटीज इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन Saqib Rahman, the captain, is going to continue with his second over from that hill end. Again, no fielder at fine leg, and that's very risky, especially when the bowler is bowling inside the batsman. This time, cut away. The fielder at short third man fielded that one off. Just a single. The run rate is now 8 runs per over. Wonderful partnership this is for the batsman, for the batting side. Again, he bowls that one wide. Smashed down to long off fielder from Umar Taslim. He has got his eye in, and now he'll be looking for that big personal score. What an achievement this will be if he can go on to those 3 figures. This time's swept away. The fielder at mid wicket cuts that one off, but not before the batsman complete the second run. Good running by the fielder. Good running by the batsman. Coach is shouting from the dugout, Umar Taslim to stay till the end. That's what we want as well. Good striking. Good support from Umar Loya at the other end as well. Slight change in the field. There is short mid wicket in place as well to go with deep mid wicket and deep square leg. Again, no fielder at fine leg. So big gap between the deep square leg fielder and the fielder at short third man. This time cut that one away. The fielder at point is pretty sharp. No run taken. Hundred comes up from Kermis strikers. Still in the 13th over. Down the track and plays over extra cover fielder. Top shot that by Umar Loya. Another boundary. The bowler flighted that one up. The batsman came down the track, and there was a big gap between the fielder at long off and extra cover. And the ball just went to the boundary. So the bowler is under pressure now. Saqib Ikhlas. This time cut away and found the gap on that occasion as well. Will that go away for another boundary? 2 in a row for Umar Loya. Wonderful piece of batting that. This time the bowler adjusted his length, bowled it wide, bowled it short, and the batsman was waiting for that length. He cut that one away, and the fielder at point was diving all over it. After the end of the over, Cayman strikers are 108 for 2. डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुंच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहां तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। Bilal Shoaib with his second over from the Gymkhana end. 7 more overs to go
Cambridge strikers will be looking to finish at round about 170, 180 to give tough time to NJS Chargers. This time hit on the back leg. It was going down the leg side. Not a huge appeal from the fielding side. There you go. Umar Taslim was going for that big shot. The ball hit his back leg. And since he's standing so much away from his stumps, so it will be difficult for the umpire to give him out LBW. This time he goes for the big shot. And he has deposited that over the long on fielder for a huge six. Umar Taslim is waiting for that land from any bowler. And he has almost log swept that over the long on fielder. Normally you see that sort of shot going over the deep mid wicket. Top shot that. Umar Taslim now moves on to 60 of just 37 deliveries. He's striking at over 170 runs per 100 balls. This time cut that one away. Top batting that. When you have got a maximum in the previous delivery, it's always good to take a single and rotate the strike. That not only keeps the pressure on the fielders but also on the bowler. The projected score there you see is 179. They will be looking for more than that. Down the wicket he comes. Checked his shot on that occasion at the last moment. The bowler bowled that slow and wide. He was looking to get the batsman out stump, but the batsman was clever enough to delay his shot in the end. Clearly, the dew is playing its part in tonight's game. The bowlers finding it difficult to grip the ball, and when you cannot grip the ball properly, you cannot turn the ball. Big appeal. The batsman was so far down the crease and also away from the stumps. There you see, came down the track and the ball hit him outside the line of the off stump. So there was no point the umpire could have given that one out. Last ball of the over coming up. Umar Loya on 40. Full toss. Driven to the extra cover fielder. No run. So a dot ball to end the over. After end of 14 overs, Cambridge strikers are 115 for 2. जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज। Let's look at a scorecard. Saad Sultan. Humayun Nadeem, in fact, was the first batsman to be dismissed of the very first delivery of the innings. He went for the golden duck. And the second wicket down was Saad Sultan. Again, Faiz Chaudhary picking up his second wicket in his very second over. And so far after that, there has been no luck for the bowling side. Umar Taslim and Umar Loya has been exceptional. Have a look at the bowling figures. Only Faiz Chaudhary has picked up 2 wickets up till now. Faizan Shoaib, Huzaifa Rizwan, all other bowlers have been wicketless. Faizan Shoaib has gone for 6.5 runs in over in his 2 overs. Huzaifa Rizwan bowled his first over as maiden, and after his second and the other 2 overs went for 23 runs. Imran Chawla has been really expensive, gave away 26 runs in his 2 overs. Even those googlies weren't working tonight. Saqib Khlas, the captain, brought himself into the attack and he went for 19 runs. Bilal Shoaib also going at 8 runs and over in his 2 overs. Crucial game this for the both teams. Whoever wins tonight is going to move at the top of the points table. Both winning their previous games against Sumia Gladiators. Both will be looking to
continue with their winning momentum. The fielding side looks relaxed, as if they are ready to chase down any total tonight. Omar Loya, I think, has paced his innings exceptionally well. Earlier on, he was going at run a ball, but now he's 40 of just 35 deliveries. He will be looking to get a half century as well. Imran, Daud Bari is into the attack now from the hill end. It's his first over. He picked up 2 wickets in his previous games. That's a full toss. Where has that gone? That has gone all the way for 6. Umar Taslim is not gonna let that crap go. It was full toss, waist height, and he was waiting for it. The batsman who is that subtle is not gonna let that delivery go. Absolutely smashed that one over the deep mid wicket fielder. The ball almost crossed the road. It was that well timed. Straight away, Daud Bari is under pressure. He was lucky the umpire didn't call it a no ball. Nicely bowled that. The batsman checked his shot at the right last moment. He was looking to go for another big shot. This time he goes for another big shot. It's high up in the air. Will it land safely or will the fielder get there? No. Just landed in front of the fielder at deep mid wicket. Would have been a crucial wicket that of Umar Taslim if the fielder had taken it. Imran Chawla. The ball went up in the air for an eternity, but just came down at the right time. Batsman is proving very lucky tonight. This time played over the wicket keeper. No fielder at fine leg. The fielder at short third man is running after that. 2 runs taken. I think the captain Saqib Ikhlas need to adjust his field a bit. There should be a fielder at short fine leg. Big gap there is between deep square leg fielder and short third man. This time defended to the bowler. Daud Bari, another leg spinner, another wicket taking option for the bowler. But I still believe it's a pretty one-dimensional attack this. After 3 overs, all the remaining overs have been bowled by the spinners. Last ball coming up. Full toss. Cut away. Found the gap between the short third man and the point fielder. Top shot that by Omar Loya. Another boundary to end the over. This time it was another full toss. The batsman moved away in his crease. Found the gap. And another boundary. 15 overs have been bowled. Cayman strikers are 129 for 2. तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में Bilal Shoaib is going to continue. What a partnership this is turning out to be for Cambridge Strikers. Another lofted delivery from Umar Taslim. This time he couldn't connect that well. The ball went all along the carpet just for a single towards deep mid wicket.
I still think these are pretty crucial last 5 overs. If Umar Taslim can stay there till the 20th over, they can even get 200. Umar Loya now just one strike away from his half century. Another full toss. Nicely driven. Will the fielder at point cut that one off? Brilliant piece of fielding. What a wonderful piece of fielding that is. Talha, the fielder at deep point. That shot had written 4 all over it. But Talha had other ideas. It was full toss. Umar Loya again came down the track. Could have been a boundary. Crucial 2 runs saved. This time cut away. This time to the other side of the fielder. Slight fumble will allow the batsman to go for the second run. Tala won't be pleased on that occasion. 50 comes up for Umar Loya now. Top knock this. Cambridge strikers were under extreme pressure when they lost those 2 wickets. But Umar Taslim and Umar Loya haven't looked back since. This time again came down the track. The fielder had extra cover. Saved that shot. No run taken. The score moves on to 134 for 2. Down the wicket he comes. Played towards deep mid wicket. Just a single though. Cheers coming from the dugout. Umar Loya already completed his half century in his previous delivery when he went back for those 2 runs. I think the dugout realized that pretty late. But a top knock though. Credit should be given where it's due. Umar Taslim now. Down the wicket he comes. Will that be taken? Good catch at the extra cover fielder. Crucial wicket this for NJS Chargers. This is exactly what not the betting side wanted. They were expecting Umar Taslim to stay there till the end. But he lofted that shot. He was going for another big shot. Sliced that in the air. And the fielder at extra cover position was waiting for it. Shayan Mateen taking a good catch running towards the offside. Top knock comes to an end by Umar Taslim. He goes for 69. Cambridge Strikers are 135 for 3 after the 16th over. पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ, ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुंच में है। इसकी साइट विजिट करें जहां तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। So the third wicket falling of the last delivery of 16th over. Was exactly what not the batting side wanted. They wanted Umar Taslim to continue till the end because he was easily hitting those big shots. New batsman is Hood Adnan, but he's going to be at the non-striker's end. Umar Loya will be on strike. He will be looking to increase his strike rate up a bit. Last 4 overs of the batting. Saqib Ikhlas starts off at a wide. NJS Chargers gave away too many extra runs in the previous game as well. This time played on the offside. Just a single. Hood Adnan getting off the mark.
of his first delivery. Umar Loya is on strike now. This time smashed on the offside. Has he found the gap between the extra cover and long off fielder? Yes, he has. Wonderful shot that by Umar Loya. He is continuing on from where he left off in the previous over. It was short, it was wide, and he absolutely smashed that past the extra cover fielder. The fielder at long off tried stopping that, but there was no way he could have stopped that boundary. Score moves along to 141 for 3. Umar Loya is a very key man. He needs to stay there till the end now. It will be difficult for the new batsman to come in and play those big shots from the word go. Played straight to the bowler. No run taken. Saqib Ikhlas has been pretty clever, but he still has given away 25 runs in his just third over. He bowled slow, but the batsman waits for that. This time again bowled that one wide. No turn on that occasion. I think Saqib Ikhlas read the pitch wrong. He was expecting the bowlers to get purchase off the wicket, but so far the pitch has played beautifully for the batsman. This time coming round the wicket. Played past it towards the deep fine leg. Big gap. The fielder at short third man cuts that one off, but not before the batsman crossed for 3 runs. That fielding position at short fine leg has been kept vacant since the very beginning, and batsmen are milking runs on that direction. This time cut away. The fielder at point doesn't allow them to go for that single. Last ball coming up of the 17th over. Score is 145 for 3. Remember, Cambridge Strikers, after winning the toss, chose to bat first. Just a single of the last ball. So after the end of 17 overs, Cambridge Strikers are 146 for 3 with just 3 overs to go. तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। कई ख्वाब Bilal Shoaib is going to continue from the Gymkhana end. Nicely lofted that. Smashed down to the long on fielder. Just a single. बॉलर कौन है? बिलाल है। So far, he has gone for 7 runs and over. He's going to finish his quota of 4 overs. Picked up the wicket of Umar Taslim in his previous over. This time hit on the offside. Over the extra cover fielder. 4 more for Umar Loya. He's playing a gem of a knock here tonight. This time he waited for that length. Played that over the extra cover fielder. There was a big gap on the offside. And it was a boundary. Top shot this from Umar Loya. His offside game has been exceptional tonight. Just believe that he has paced his innings beautifully now. 62 of 46 deliveries. Down the wicket he comes. This time's played all along the carpet to the long on fielder. Single taken. 150 is up for Cambridge Strikers. Still 15 more deliveries to go. Can they go for at 180? Can they achieve that 180 mark? This time reverse swept. Completely missed that one. As the bowler saw the batsman changing his position, he bowled that slow and low. The ball didn't bounce, otherwise that could have gone to the boundary. This time he bowls it flat, he bowls it fast.
Played towards deep mid wicket fielder. Just a single. All the fielders are deep on the onside, whereas the fielders on the offside are all inside the circle. Umar Loya is on strike. This time he cut that one away. Will the fielder at short third man cut that one off? Yeah. Fancy footwork there. Just a single. So after the end of 18 overs, Cambridge Strikers are 154 for 3. जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हों, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। Last 2 overs of the innings coming up now. Cambridge Strikers are 154 for 3. Can they go past 180? 54. Ball. Faizan Shoaib coming back into the attack. It was a good shot. Nicely fielded at the point position. That shot had Litton 4 all over it if he had found the gap on that occasion. Faizan Shoaib earlier giving away 13 runs in his first 2 overs. Now coming back into the attack from the hill end. Cut away again. Will they go back for the 2? No, the fielder had deep extra cover. Just keeps that down to the single. Still think Umar Loya needs to take most of the strike to go for those big shots because he's the one who is settled. He's on 65 of 49 deliveries. This time played down the ground. The fielder at long off will collect that one. Just a single. Good over this from Faizan Shoaib so far. Just 3 singles of his first 3 deliveries. Current run rate is almost 8.5 runs an over. This time he has pulled that one away. And it's a good catch at the long on position. There was a slight fumble and he took it in the second attempt. It was shot. The batsman absolutely smashed to the long on position, and Anas Tariq took it too casually at the first attempt, but somehow completed the catch in the second attempt. So 4th wicket down for Cambridge Strikers, and the score is 157 for 4. Luckily for the batting side, Umar Loya is still on the crease. The batsman dismissed is Hood Adnan for just 5 runs. अब हकीकत हो सकता है। जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफिजा मकान में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेयर प्लान बैट्समैन कौन है? Khurram Shahid is the new batsman, but he's at the non-striker's end. Umar Loya played towards the offside. Will he go for the second run? I think he should, and yes, he will. Good running by the batsman on that occasion. Umar Loya realizes that he is the one who has faced more deliveries, so he needs to be on strike if they want to finish at somewhere near 170, 175. Last ball of the over coming up. Brilliant over this from Faizan Shoaib so far. He has picked up a wicket and hasn't conceded any boundary. Last ball, driven down the ground, but slight fumble from the bowler, and the batsman completed that run. Have been bowled. Cambridge Strikers are 160 for 4. Last over to go. Well planned road network,
24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। Last over coming up. Cambridge strikers 160 for 4. Looks like Imran Chawla is gonna pull the last over. So far, he has been pretty expensive in his 2 overs. Conceded 26 runs. बोलो बोलो Pulled that one away. Didn't time that one at all. Got a leading edge. Just a single. बोलो बोलो The new batsman at the crease is Khurram Shahid, the left-handed batsman. There will be changes in the field for the left-hander. Deep square leg comes into position. Deep mid-wicket. Deep long on, long off. Deep extra cover. This time they have kept the fielder at short fine leg. It will be difficult for the left-hander to go for those big shots from the word go. This time coming down the track, getting a leading edge, going nowhere just for a single. This is what happens when you lose wickets at last stages of the innings. The new batsmen find it difficult to go for those big shots. Cambridge strikers were looking to get 180 comfortably when Umar Taslim and Umar Loya were batting. But since then, they have lost those 2 wickets and the score rate has dropped. Down the wicket he comes, played that wide of the long on fielder. The fielder at deep mid wicket cuts that one off. 2 runs taken by the batsman. Four runs of the first three deliveries of the last over. Imran Chawla isn't looking to turn the ball a great deal in his final over. He knows if he can give more flight and the batsman will connect, he can travel for the boundary. And this is exactly what his team needs right now. अबे Omar Loya giving away his helmet. He has batted beautifully tonight, along with Umar Taslim as well. Still think he has paced his innings beautifully. Down the wicket he comes. It's a leading edge. Will that be taken? And Umar Loya has been dismissed, trying to accelerate the innings. Top knock comes to an end, and Imran Chawla has picked up his first wicket of the match. Imran Chawla adjusted his length, bowled that slow when he saw the batsman coming down the track. He tried to hit that over deep mid wicket, got the leading edge, and it was taken easily by the fielder at cover position. So Umar Loya, after batting beautifully, has been dismissed for 72 runs, 64 for 5. से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुंच में है। इसकी साइट विज़िट करें, जहां तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके। So last 2 deliveries coming up. Good over this from Imran Chawla so far. Kamran Shahid is on strike, and it almost was a non-striker killer. It went straight to long off, but it was pretty close to the field
batsman at the other end, and he wasn't even wearing the helmet, could have seriously injured himself. Luckily for the non-striker, it didn't hit him. Last ball of the over coming up. Last ball of the inning coming up, in fact. The score is still 165 for 5. Anas Iqbal is the new batsman. His first ball will be the last ball of the innings, unless it's a wide or a no ball. Imran Chawla. This time he has pulled that one away. The fielder at deep end wicket slide fumble. Will they go for the second run? There is a throw at the batsman end, and the batsmen complete those 2 runs. So Cambridge Strikers have finished their innings on 167 for 5. Good over that from Imran Chawla. Let's look at the batting card. Humayun Nadeem was the first batsman to be dismissed of the very first delivery of the innings. Then it was Saad Sultan who again was dismissed by Faiz Chaudhary, and then there was this big partnership between Umar Taslim and Umar Loya. Umar Taslim then getting dismissed for 69 runs after hitting 3 huge maximums. Then there was Umar Loya, who I think paced his innings beautifully and ended up with 72 runs. Faiz Chaudhary was the first bowler to pick up 2 wickets in his first 2 overs. Faizan Shoaib gave away 19 runs and picked up a wicket in his later spell. Huzaifa Rizwan went wicketless in his 3 overs. Imran Chawla also picking up a wicket in the final over of the innings. Saqib Ikhlas went wicketless, went for 10 runs and over in his 3 overs. Bilal Shoaib also picking up just 1 wicket, the important wicket of Umar Taslim, and Daud Bari only bowled 1 over and conceded 13 runs. So the target for NJS Chargers when they will come out to bat in the second innings is going to be 166 in their 20 overs. मुस्तकबिल का मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है।
वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विजिट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़े एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विजिट करें जहां तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़े एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है।
सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विज़िट करें, जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हों, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विज़िट करें, जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हों, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और Welcome back to the second innings of this seventh game in Gulmohar City presents Youth Friendship League. Cambridge strikers earlier posting 166 in their allotted 20 overs. After winning the toss, their captain deciding to bat first, and it was a good batting effort from the batting side. Umar Taslim scoring 69 and Umar Loya 72. First ball coming up, slow left arm bowler, played it straight to the bowler. Danish Riaz taking the new ball from the Gymkhana end. Again, hit that straight to the bowler. The slow left arm bowler has taken a slip. He'll be looking to turn the ball away from the right-handed batsman, Chaudhry Saif.
This time he has bowled that wide, and he got an outside edge. Will that run away for the boundary? Stopped by the fielder at third man. The batsman completed 2 runs. I don't think that was a chance for the fielder at first slip. The ball was kept low. He got an inside edge. The fielder outside the 30-yard circle are long off and long on. All other fielders are inside the circle. Look to prevent those singles. This time again, hit back to the bowler. Umar Taslim standing at the first slip position. Batted beautifully in the first innings. Good start this from the bowler so far. This time it was short, cut away. The fielder at cover gathers that. No run taken. NJS Chargers will be looking to pace their innings nicely. The target is not a small one. This time it was short. He went for that big shot. Slight appeal from the bowler, but no signs from the umpire. The first over have been bowled. NJS Chargers are 2 for no wicket. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ Omar Loya is going to share the new ball from the hill end. He also batted beautifully in the previous innings. Can he turn out to be the golden arm for his side? This time nicely played down to mid-off fielder. Munib Javed, as we all know, batted beautifully in the previous game. Scored 80 runs of 53 deliveries, for which he was also adjudged the man of the match. This time it was short, it was flat. He went for that cut shot, completely missed that. Umar Javed. We also saw that in the previous game that his game towards the offside was not that strong earlier on the innings. This time nicely driven to mid-off fielder. No run taken. Munib Javed holds the key to this chase. He needs to bat deep if NJS Chargers want to get anywhere near to this total. Good economical start this from Omar Loya. This time ball that wide. Again Munib Javed going for that cut shot. Couldn't connect it. Again missing it altogether. The ball keeping low, not turning a great deal into the batsman. And Munib Javed missing it altogether. He's yet to get off the mark. He also didn't get off to a flyer in this previous game. Paced his innings beautifully. This time again, going for that big shot, hitting it straight to the bowler. No runs come off this over, so a maiden to start off from Umar Loya. After 2 overs, NJS Chargers are 2 without a wicket. आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, एचडी और एसबीसी से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची ये कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। Danish Rehan is going to continue from the Gymkhana end.
conceded only 2 runs in his first over. Umar Taslim there waiting at first slip for the edge. This time he has swept that one. Has he found the gap on the leg side? I think he has. That will be the first boundary to the batsman. This time he dragged his length and the batsman was waiting for it. There was a big gap between the mid wicket fielder and the square leg. There was no one on the onside deep, so he had ample time and ample gap to find. Chaudhry Saif picking up his first boundary. Will there be any changes in the field? No, still no one on the onside. Long on and long off are deep outside the 30-yard circle. Nicely bowled into the stumps. Don't think he's looking to turn that ball a great deal. Still think he's relying on that arm ball coming back into the right-handed batsman. When the ball is still fresh and new, it swings in the air. This time goes for that sweep shot, gets a leading edge, and it has been dropped. Would you believe it? It was a dolly. The fielding side cannot believe it. Again, he went for that sweep shot, got top edge, completely mistimed it, and the fielder just took that very casually. He reminded that of us of that Arshdeep Sim drop catch. Took it too casually in the end. Everyone thought, including us, that it was the first wicket for NJS Chargers. This time again, hit straight back to the bowler. Danish Rehan will be considering himself extremely unlucky. There again, beautifully bowled. He's a wicket to wicket type of a bowler, not allowing any length, not giving any length or room outside the off stump. Last ball of the over coming up. It was short. He has cut that away and he found the gap. This will be another boundary. Top shot that by Chaudhry Saif. Second boundary of the over. This time he bowled that shot. He bowled that wide and Chaudhry Saif was waiting for it. यार बात सुन वो जरा activation After करने 3 overs, NJS Chargers are 10 without a wicket. जल्दी कर जल्दी ऑडियो बंद कर दो ऑडियो Umar Loya is going to continue from that hill end. He's adjusting his field according to his bowling. The fielder at short third man now goes to long off. The long on fielder is outside 30-yard circle. There is a deep mid wicket in place. Square leg is inside the circle, standing right to the leg umpire. This time it's short. It's in the stumps. It's pretty close. The umpire is unmoved. Munib Javed was completely surprised by that delivery. He bowled it fast. It was short and hit his back leg, and it was right in front of the stumps. The bowler will consider himself very unlucky. Munib Javed could have been heading back to the pavilion on that occasion. Could have been 2 wickets down, NJS Chargers. This time he goes for the big shot, plays it over the head of the ball, and this will be the first boundary to Munib Javed. This time the bowler bowls it full, and Munib Javed was waiting for it. He had enough of it. He couldn't score any runs in the previous over. Now he has scored his first boundary. Hopefully that will get him going. The score moves on to 14 for no loss. This time played wide of the mid-off fielder. No run taken. The fielders are pretty sharp. They know the importance of this batting power play. If they can manage to reduce the run rate below 6 and over,
I think they would consider they have done a pretty good job. This time on to the stumps. Nicely played down to long on. 2 runs taken. There was a big gap between the deep mid wicket fielder and deep long on. Munib Javed moves on to 6 of 10 deliveries. NJS Chargers could have been 2 wickets down. A drop catch in the previous over and the LBW appeal turned down by the umpire. I think it was pretty adjacent. This time it's short. Heave that away towards the onside. The mid deep mid wicket fielder will collect that one. 3 boundaries have been scored so far. Still the fourth over being bowled. Last ball remaining of the fourth over. What can Umar Lohia do? Can he pick up a wicket in this last ball? This time it's short. Cut that one away. Has he found the gap? Yes, he has. Another boundary. This will be for Chaudhary Saif. So he has finished this over in grand style. Umar Lohia adjusting his length. Ball that wide, ball that short. And Chaudhary Saif was waiting for it. There were so many fielders on the offside and he still managed to find the gap on that occasion. So after 4 overs, NJS Chargers are 21 without a wicket. जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमहर सिटी कराची की साइड पर और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस Change in the bowling attack from the Gymkhana end. New bowler coming up. Seems like another spinner is going to bowl. Abdullah Nawab. So far, it's a pretty good start from NJS Chargers. They haven't lost any wicket. Heaved away on the onside. The fielder at square leg cuts that one off. Umar Taslim just keeps it down to single. Right arm leg spinner Abdullah Nawab. This time he has flatted that one and the ball came back into the batsman. Not huge amount of turn in this pitch as we have seen tonight. He gave that a bit of in the air and the batsman just didn't know where the ball is going to turn. He went for that cut shot again but completely missed that. This time again played that cut shot. The fielder at extra cover stops that. Just a single of first 3 deliveries from Abdullah Nawab's first over. Long off and long on are outside the circle. This time it has hit the pad. Not a huge appeal from the fielding side. Rightly so, umpire telling the ball was going down the leg side. There you see. The batsman has been exposing his stumps, so there was no chance the umpire could have given that one out. This time the ball came back in. Good piece of bowling this from Abdullah Nawab. He's keeping the batsman guessing. Chaudhary Saif couldn't score much runs in previous game. He will be looking to make the most of this opportunity and take his side through to their second win of this tournament. This time it has again hit his back leg. Went for that sweep shot. The ball was too full. Just 1 run coming off this over. NJS Chargers are 22 without a wicket after 5. इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने।
वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विजिट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। The current run rate is 4.4 runs and over. Only 4 boundaries have been scored in the batting power play so far. No 6 has been conceded in this innings by Cambridge strikers. Munib Javed will be looking to score big now. He has been kept quiet by the bowlers. Umar Loya is going to continue. He has smashed that one straight down to long on. Just going to be a single. Umar Loya. He's a pretty clever bowler. Almost got the wicket of Munib Javed in this previous over when the umpire turned down the LBW appeal. Coming round the wicket. Pulled that one away. The fielder's square leg was positioned perfectly. No run taken. Chaudhry Saif is on 14. Can he utilize these 4 deliveries of the batting power play? Only time will tell. This time he has bowled that wide. It was inside the wide line, so umpire had no hesitation in not giving that wide. The batsman was surprised by that quicker delivery, moving away from him. This time it's short, pulled that one away. The fielder at deep mid wicket won't cut that one off. This will be a boundary to Chaudhry Saif. It was short, and Chaudhry Saif was waiting for it. He attempted this shot previously in the over, couldn't time it, found the fielder. This time he found the gap and got a boundary. The score moves on to 27 for no loss. Last 2 balls coming up of the batting power play. This time it's short again. Cut that one away again. Nice footwork by the fielder on the offside. Just going to be a single. It had 4 written all over it had he found the gap on that occasion. The bowler coming over the wicket to Munib Javed now, who is on 9. Bowls that one wide. The umpire rightly so signaling it wide. Another extra run added to NJS Chargers total. The score moves on to 29. Still last ball to go in the batting power play. This time he has hit that straight. Will that go all the way? Yes, it does. The last ball of the batting power play has gone for 6. Munib Javed was waiting for it, and it was a good shot. He knew the fielder at mid-off was inside the circle, and he timed that well enough. So after 6 overs, NJS Chargers are 35 without a wicket. जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हों, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज। So the batting power play comes to an end. The last ball of the batting power play going for that crucial 6, the first 6 of the innings. The fielding side can now afford to have fielders outside the 30-yard circle. There is a fielder at deep point. Long off and long on are all both outside the 30-yard circle. Deep mid wicket is also in place, and there is a fielder at deep square leg as well. Short third man and short fine leg are inside the circle.
Another fielder comes in the extra cover. Abdullah Nawab is going to continue. This time he cut that one away. The fielder at point is going to cut that one off. No run taken. The ball is keeping low. So far, we haven't seen bowler using any towels. That suggests there is not much dew here tonight. The umpires having a chat with the bowler. Not sure what that's about. Chaudhary Saif is on strike now. Again, the ball coming back in. The fielder. The batsman at the non-strikers end was interested in the single, but the batsman turned that away. This time again, cut that slide fumble at the extra cover position will bring a single. Not good piece of fielding there by the fielder. It extra cover. So far, another good over from Abdullah Nawab. Just a single conceded of the first three deliveries. NJS Chargers are still scoring under 6 runs and over. The required run rate is almost 9 runs and over. Full toss. Played to the cover fielder. There was a throw at the announced striker's end, but the batsman was well in. Another single completed. There you go. The required run rate is over 9 runs and over. In fact, 9.7 to be precise. They will be happy, NJS Chargers, that they haven't lost a wicket yet. And the bowling side, on the other hand, will be pretty happy that they haven't conceded many runs. This time again, hit towards the cover field. A beautiful piece of fielding that could have been a single. Good piece of fielding by the fielder at cover position. Appreciated by the fielder at extra cover. Last ball of the over coming up. Chaudhary Saif on strike. This time hit down to long on. Just gonna be a single. So Abdullah Nawab has been proving very economical in his 2 over spell so far. 7 overs have been bowled and NJS Chargers are 38 without a wicket. की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम अब वक्त मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुल मोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मुकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट वेल प्लान। Change in the bowling attack from the hill end. Khurram Shahid is into the attack. Another spinner. Left arm unorthodox. Pretty unusual action that. Starting off with a wide delivery. Quick arm action that. It will be interesting how he can bamboozle the batsman with his unusual bowling action.
Starting off with the wide. There you go, another wide. Chaudhary Saif lightly letting that ball go. This time cut that one away. Beautiful shot played over extra cover fielder. That has gone all the way. What a piece of timing on that occasion by Chaudhary Saif. Clearly the bowler is struggling with his line and length. This time again bowling it short, allowing the batsman to free his arms and playing it over extra cover position for another 6. Not a good start this from the bowler Khurram Shahid. Chaudhary Saif slowly and steadily moving up the scorecard. Remember, whoever wins tonight moves up to the top of the points table. This time again short, and he has hit that straight. Has he found the gap? No, the slight misfield on that occasion. Has this been a boundary? The fielder at long on isn't too confident. Just a couple though. The bowler using the towel to dry the ball up. It's hard to grip the ball tonight. This time it's short again. Played towards deep mid wicket. Will they go for the second run? Yes, Munib Javed is going to the keeper's end and reaching there in time. So good over this is turning out to be for NJS Chargers. Just one run away from their 50. NJS Chargers pulled that one away. Goes straight to deep mid wicket. And the 50 comes up for NJS Chargers in the 8th over. Chaudhary Saif and Munib Javed both looking settled now. This time played over extra cover. There is a fielder getting underneath that one. And the catch is completed. The front wicket down for NJS. He bowled that one wide, gave it in the air. And Chaudhary Saif tried to play that over the extra cover position. The fielder was there waiting for it. And the first wicket down for NJS Chargers. The score is 50 for 1. And the batsman dismissed is Chaudhary Saif after scoring 28 of 30 deliveries. रोड नेटवर्क 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी, इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बना। So NJS Chargers have lost their first wicket. Chaudhary Saif was looking settled, losing his wicket at the wrong time. The batsman crossed. Meanwhile, Munib Javed is on strike. This time hit it straight to the bowler. So over comes to an end. NJS Chargers are 50 for 1. सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है,
और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुंच में है। इसकी साइट विजिट करें जहां तरक्कियाती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताजगी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी। एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, Change in bowling from the Gymkhana end. Hood Adnan has been given the ball. Shayan Mateen is on strike. He will face his first delivery. He's the new batsman in. Chaudhry Saif, as we saw, was dismissed in the previous over, trying to hit that big shot over the extra cover fielder, but the fielder were positioned perfectly at the boundary. Big responsibility on the shoulders of Munif Javed now. Nicely bowled, nicely clipped on the onside. Fielded off his own bowling. Hood Adnan, just a 1 run. The fielder at the cover position is outside the 30-yard circle. Long on and long off in place. This time bowled it slow, bowled it wide. Dot ball. Dot balls are crucial at this stage of the innings. If you can bowl those dot balls, you can create pressure on the batting side, and the batsman is then obliged to go for those big shots, and he can end up losing those wickets. This time again bowled it slow, played towards the offside. No run taken. Nicely fielded. Third man and fine leg are both inside the 30-yard circle. Good start so far from Hood Adnan. This time again bowling it slow into the stumps. Played down to long on. Just a single. So we haven't seen much aggression from Munib Javed as we saw in the previous game. Shayan Mateen is still pretty new at the crease, so he will take his time to get settled. This time again, almost dragged that ball back into his stumps. Good piece of bowling this from Hood Adnan. He knows if he can bowl it slow, the batsman will have to take extra effort to go for that big shot. As you see, he bowled that slow, the off cutter. The batsman went for that cut shot and almost dragged that back onto his stumps. This time played down to long on, just a single. So good over comes to an end from Hood Adnan. NJS Chargers are 53 for 1 after 9. जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, HD और SBC से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची में कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट वो विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए।
वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। प्रीमियम विलास, स्टे Khurram Shahid is going to continue with his second over, the only wicket taker in this innings so far. The left arm unorthodox, again starting off with a wide. In fact, it has not been given as a wide. I think it was very close to that wide line outside the off stump. Nicely bowled, this time clipped on the leg side. Just be a single. Fielded by the fielder at short fine leg. During the overs, we saw Munib Javed changing his bat. Clearly, he's looking to go for those big shots now. The run rate is still under 6 runs an over. This time he gets the leading edge and it's taken at short third man. So the change of bat hasn't worked for Munib Javed. And Khurram Shahid has picked up his second wicket. Nice easy catch that for Danish Rehan at short third man. He went for that big shot. Munib Javed got a leading edge and a soft dismissal in the end. He couldn't continue with his form as we saw in previous match. Munib Javed, the batsman, dismissed for just 20 runs. And NJS chapters are now in a bit of bother with 54 for 2. ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है So second wicket falling of the last ball. The crucial wicket that of Munib Javed. The new batsman is Yahya Rizwan, the left-handed batsman. Nicely driven down the ground to the long off. He's off the mark of his first delivery. Khurram Shahid now has picked up his second wicket. Shayan Mateen is on strike. Cut that one away. Couldn't find the gap on that occasion. Umar Taslim was there at extra cover position. No run taken. Last ball coming up. Good over this from Khurram Shahid. This time played towards the onside. The fielder at deep mid wicket will rush towards the ball. Just a one run. So after 10 overs, NJS Chargers are just 55 for 2. यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए, आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है
Hood Adnan is going to continue from the Gymkhana end with his slow medium pace. Nicely bowled that cutter. Played down to long off. आप ही की अच्छी के लिए बोल रहे थे ना Just a single. I think it's pretty clever bowling. He's not giving any pace to the batsman to work with. He's bowling wicket to wicket. Those cutters, slower balls, making sure that he doesn't concede more than a single. A single is as priceless as a dot ball as far as no boundaries are being hit by the batsman. To be really honest, NJS Chargers haven't taken any big risk. They haven't played those aerial shots. Yahya Rizwan is on strike now and he has been bowled. There you go. No pace on that delivery again. इसका A game. It was a slower delivery and this time he gets a bit of inside edge and the ball rolled back to the middle stump. Yahya Rizwan has been dismissed of his second delivery and he goes back after just scoring one run. NJS Chargers have lost their third wicket for just 57. अपने मारेगा उसमें ऑडियो भी सब बंद कर दो। There we see again how the batsman was dismissed. It was a slower delivery. He was trying to play it straight, getting a small inside edge, and the ball went back to hit the middle stump. So NJS Chargers now have lost their third wicket. They are losing wicket at regular intervals now. This will give huge confidence to Hudadnan. फैजान आया फैजान The new batsman is Faizan Shoaib. He will be on strike. Not big changes in the field. Third man, fine leg, both inside the circle. इस कैमरे की कलर अच्छी नहीं This time, played towards the offside. Faizan Shoaib is off the mark with a single. Shayan Mateen is back on strike. Again, that slow, loopy delivery. Batsman had absolutely no clue what sort of shot to play on that ball. It was in the stumps. He went to play that big shot, but then realized he can also york himself. This time, bowled it fast. Driven past the short third man fielder. Will it go all the way for four? Cut off by short third man fielder just inside the boundary. And it's an run out attempt, but the keeper couldn't gather the ball. It was a good throw from the deep, but the keeper failed to gather the ball on that occasion. Could have been four down NJS Chargers. Shayan Mateen should consider himself lucky. Could have been the second wicket in the over, courtesy of a run out. Brilliant throw it was from the deep by the short third man fielder. Last ball coming up of Hoodandan second over. This time again bowling it slow. Played to short third man. Completed the single. The 11 overs have been bowled. NJS Chargers are struggling 62 for 3.
आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हों, जहाँ की फ़िज़ा में ताजगी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, Saad Sultan is replacing Khurram Shahid from the hill end, adjusting the field. He's going to start around the wicket. Goes for that slog sweep, completely mistimed that. It's going to be like buys. One thing that Cambridge Strikers captain has done better than the NJS Chargers captain is to have a fielder at fine leg. We saw so many runs being scored at that position, but they have continuously kept a fielder in that position. Shayan Mateen on strike, trying to hit that big pull shot. It'll just be a single. So the required run rate is creeping up. Current run rate is still under 6 runs and over. The batsman was not ready, I guess. Dead ball signal by the umpire. Big gap between short fine leg and deep square leg. This time again going for that big shot, getting an inside edge. The ball hit his back leg, going absolutely nowhere. Another dot ball. I think this angle from the bowler is struggling the batsman. It is disturbing this batsman. This time played towards the offside. Just a single. Will there be overthrows? Yes. Another run added. Not good backing up by the fielder at mid wicket position. Just 3 runs of this over so far. This time again going for that big shot, and there has been chance of stump, and it has been given by the umpire on the leg side. Fourth wicket down for NJS Chargers. The batsman stumped on that occasion. Saad Sultan bowled it slow. The batsman going for that slog sweep, and his back leg moved, and wicket keeper had presence of mind of taking the bails off quickly. Another wicket goes down for NJS Chargers. They are 66 for 4. Good piece of wicket keeping by Obed. They are losing wickets at regular intervals, NJS Chargers. This will dent their chase further. They still require more than 100 runs under hardly 8 overs to go. Let's look at the batting summary so far. Chaudhry Saif was looking good before getting dismissed by Khurram Shahid. He went for 28 runs. Muneeb Javed also stayed at the crease for some while, but even he was dismissed after scoring 20. Yahya Rizwan only scored one of two deliveries, and the last batsman dismissed was Faizan Shuaib, stumped by Hasib of Saad Sultan. Shayan Mateen is still at the crease for his 9 runs.
The captain has made his way back into the middle. Saqib Ikhlas, big responsibility up his shoulders. Hit that straight back to the bowler. No run. 12 overs have been bowled. NJS Chargers are 66 for 4 and struggling. Let's look at the bowling performance from the Cambridge Strikers bowlers. Danish Rehan giving away only 10 runs in his 2 overs. Umar Loya, I think, was pretty unlucky. He should have got that leg before decision in his favour. Still getting went for 24 runs. Abdullah Nawab only conceding 4 runs in his 2 overs. Khurram Shah hit the left arm unorthodox bowler, getting 2 wickets. Hudadnan also picked up 1 wicket in his previous over, and Saad Sultan getting a wicket of the Faizan Shoaib stumped. Hudadnan is going to continue. Big shot down the ground. Will that be taken? That has been dropped at a long on position by the fielder. He took it too casually in the end. Shayan Mateen absolutely smashed that one towards long on fielder. For the moment, I thought he has timed that well, but the fielder at long on, it was an easy chance, and it's the second drop catch of the night from Cambridge Strikers fielders. This time bowling it slow, and it was pretty close to that off stump. An inch to right, and it would have castled the off stump of the batsman. Beautiful piece of bowling by Hudandan. He's changing his pace regularly. This time bowling it short, pulled that away by Saqib Ikhlas. Will they go for the second? No, the fielder at deep mid. We can make sure it's just a single. So the batsmen are showing signs of intentions in this over of Hudandan. Hudandan almost picking up his second wicket. This time again, played down to long on. Just a single though. If they had taken their chances, Cambridge Strikers fielders, NJS Chargers would have been 6 down. Who knows? This time bowling it slow, playing it in the air on the onside. It's into the gap between square leg and deep end wicket. Just a single. Eh, It's a big ground. It's going to be tough to hit those big shots. They will have to rely on those twos and threes as much as possible. So far, this chase is going go nowhere. Still scoring under 6 and over. This time again pulling it away. Has he got an inside edge? There has been an appeal. Turned down by the umpire. So 13 overs have been bowled and NJS Chargers are 70 for 4. It was short, it was slow, it hit his back leg. The keeper collected that catch. For a moment, we thought it's an inside edge, but umpire was not interested at all. 70 for 4 after 13. NJS Chargers. University, hospital, community centers, commercial avenues, cafes, restaurant, auditorium, cinema, supermarkets, shopping mall और sports complex भी, luxury high-end apartments, premium villas, state of the arts hill resorts और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब। उमर लोया पे कौन था वो? मुनीब जावेद था। Saad Sultan is going to continue with his second over. Pulling around the wicket. Captain Saqib Ikhlas is on strike. Goes for another heave. The fielder at deep square leg is going to cut that off. Hudadnan. So far we have seen good piece of bowling from Hudadnan. Shayan Mateen has now faced 14 deliveries. He's there at the keys for quite a while now.
Cambridge Strikers bowlers have been pretty disciplined. They have only given away 3 extra runs so far. This time he has pulled that one away. Has he found the gap? No, good piece of fielding by the fielder at long off. It'll just be a single. There should have been 2 at least. It went right in between the fielders at long off and long on. The batsman thought they had hit that for a boundary. It's just a single. Another misfield at short fine leg. Saqib Ikhlas. Just a one. When you're realizing that it's hard to hit those boundaries, then you should be vigilant and proactive when it comes to take those twos and threes. But the running has been pretty average as well. This time he has pulled that away. Has he found the gap? Yes, he has. Welcome boundary for NJS Chargers. It was short and the batsman was waiting for it. He saw that length early, positioned himself perfectly, and found the gap between the deep mid wicket and long on. It was a huge gap as well. Welcome boundary to NJS Chargers. Shayan Mateen moves on to 16. 6 fours have been hit so far in this innings, 2 maximums. The required run rate is over 14 runs and over now. This time he has bowled that wide, gets a leading edge. The fielder at short third man is after it. He'll cut that one off. Just a couple again. The batsmen are trying to play those big shots. And that's what they should do as well, especially knowing when the required run rate is over 14 runs and over. This time coming down the track, hit that in the air. Will the fielder at long off take that one? It's a wonderful catch. For a moment, I thought the fielder at long off is going to take that one, but the fielder at extra cover had the other ideas. Good running catch over his head. He tried to hit that straight. For a moment, he thought the ball is going to land perfectly, but the Umar fielder at extra cover, Umar Taslim, juggled it and took it in the second attempt. Another wicket down for NJS Chargers. This time, settled batsman Shayan Mateen dismissed. NJS Chargers are now 79 for 5. And second wicket to Sal Sultan. वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ, ये सब अम्यूनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विजिट करें, जहां तरक्याती काम तेजी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़। NJS Chargers losing Shayan Mateen of the last delivery of previous over. Hood Adnan is going to finish his spell with his fourth over. He has been pretty economical, has also picked up a wicket. The new batsman is Anas Tariq. He's going to be on strike. He can hit those big shots, and that is exactly what NJS Chargers required of him. This time another solo over delivery played towards the offside, nicely defended. I think it's a very good time for a batsman like Anas Tariq to be on the crease.
He still can afford to place those dot balls initially and then go for those big shots. He has this reputation. This time goes for the big shot, getting an inside edge. The fielder at short fine leg threw it at the keeper's end, and will there going to be overthrows? Yeah, there will be. So 2 runs for Anastari to get off the mark with. Lucky 2 runs. Score moves on to 81 for 5. Cambridge strikers, fielders looks a bit relaxed now. I think they think they may have won the match, but the match is still not over until the last ball gets bowled, as we saw in the previous game. Nicely loopy delivery. Played it down to short third man. Dot ball. He's changing his pace beautifully today. Hudannan conceding only 15 runs in his fourth over. This time again bowling it slower. Pull it away by Anas Tariq. Just over ahead of the short fine leg fielder. Another single. Boundaries are hard to come. That's why I think one of the top order batsmen should have stayed at the crease for a longer time. This time played down the ground by the captain Saqib Ikhlas. Just gonna be a single though. Adnan cleverly bowling according to his free placements. This time again bowled that one wide. Driven past the extra cover fielder. But the fielder at long off is going to collect that one. Just a single to Anas Tariq. 15 overs have been bowled. NJS Chargers are 83 for 5. एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है, वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर। Khurram Shahid is back into the attack from the hill end. Unorthodox left arm spin. This time played towards the offside by Anas Tariq. Just going to be a single. Another 83 runs required. 82 runs required now of 29 deliveries. This time again played towards the offside, but there is protection in the deep. Just a single. The singles won't hurt the fielding side as long as they are not conceding any boundaries. It's a daunting task for the batting side though. Anas Tariq going for that big shot. Has he cleared the fielder? The ball has gone over the ropes. Anas Tariq hit that straight. The fielder at long off dropped that, and I think the ball landed inside the boundary, so the umpire is going to signal that as 4. This time again hit on the offside. Just a single. Again hit on the offside, and he has found the gap on that occasion. Will the fielder deep on the onside cut that one off? Yes, he will. Just
A couple. So we have seen the signs of aggression in this over from the two batsmen out there. Anas Tariq first scoring the boundary, and now a couple from the bat of Saqib Ikhlas. Last ball of the over coming up. Again, hit on the offside. Throw towards the keeper, but the batsman completed the single. 16 overs have been bowled. NJS Chargers are 94 for 5. गुल मोहर सिटी कराची एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मुकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेयर प्लान और आर्किटेक्चर वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBC से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुल मोहर सिटी कराची कह रहा है कि हम दावा नहीं करते, अपना प्लॉट बुक NJS Chargers requiring 73 runs of the last 4 overs. The required run rates more than 18 runs an over. Anas Tariq will be on strike. Danish is coming back into the attack from the Gymkhana end. Hit towards the onside. That fielder at deep mid wicket is going to collect that one. Just a single. Saqib Ikhlas and Anas Tariq have shown the intention of scoring those big shots, but as I said, the boundaries are big, square on the offside and on the onside to it, so it's hard, especially to the spinners. This time Anas Tariq again going for that big shot. Nicely fielded by the fielder at deep mid wicket. Just a single. Danish Rihan again drawing the ball. He hasn't got a bit of purchase on from this track, but he has been bowling pretty wicket to wicket, as we see in the last ball as well. The ball being very close to the off stump. This time hit on the offside. The fielder at T point is going to cut that one off. Hood Adnan. He's going to throw it back to the bowler. Just a single. That's where I think NJS Chargers are lacking. They have only scored 7 boundaries and 2 maximums in their 16 overs. And up till that stage, Umar Taslim had already scored 3 sixes alone. This time again going for that cut shot, completely missing Anas Tariq. 70 required now of 20 deliveries. Almost seems impossible now for NJS Chargers to come back into this competition. This time again played on the offside. Just a single. Singles won't hurt. Singles won't hurt the fielding side. 17 overs have been bowled. NJS Chargers are 98 for 5. जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुंच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहां तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद Abdullah Nawab is coming back into the attack from the hill end. The required run rate
is 23 runs per over, 69 required of the last 3 overs. Anas Tariq is on strike. Can he hit those big shots? Pulled that one away. Has he found the gap on that occasion? The fielder at deep mid wicket giving up the chase. Collects that one. Just a couple. Big boundaries on the square, on the offside and on the onside. That's why I think the best option is to hit it straight. This time again, going for that big shot. The fielder at deep mid wicket has taken it cleanly. So Anas Tariq has been dismissed again. And Abdullah Nawab has picked up his first wicket of tonight. It was a fuller delivery. Anas Tariq's eyes lit up. He went for that slog sweep, but the fielder at deep mid wicket was positioned perfectly and he took that catch easily. 6 wicket down now for NJS Chargers. The batsmen dismiss Anas Tariq for just 14. NJS Chargers are 100 for 6. जिंदगी हो जहां आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम। Imran Chawla is on new batsman in. It's a wide delivery from Abdullah Nawab, signaled by the umpire. Just the 4th extra run conceded by the Cambridge strikers, which shows they have been pretty disciplined in the field and in the bowling. This time he cut that one away, fielded in the deep on the offside. Slight misfield, but just be a single. Pretty impossible task this for NJS Chargers now. They still require 65 runs of 15 deliveries. Saqib Ikhlas is on strike. Again, hitting it towards the mid-wicket fielder. No run. Pretty special effort this from the Cambridge strikers bowlers. This time again going for that big heave on the offside, getting an inside edge. Fielded by the fielder inside the circle. Not timing it properly, Saqib. Last ball of the over coming up. Saqib Ikhlas having a word with Imran Chawla. Full toss again, hit towards the onside. There is a fielder deep on the leg side, will just be a single. So 18 overs have been bowled. NJS Chargers are 104 for 6. Require another 63 runs of the last 2 overs. से पहले एक बार साइड जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइड पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइड पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं।
The match is well within their backs, Cambridge strikers, so if they've tried their new option, Daniel Tahir. Ooh, narrowly close to the off stump, starting with that slower delivery. The batsman going for that pull shot, completely missing that. The ball also keeping low. This time going for another big shot towards the onside. It'll just be a single. Singles won't hurt. Just 7 boundaries and 2 maximum conceded by Cambridge strikers. Daniel Tahir bowling his first over of the game tonight. This time hit down the ground by Saqib Ikhlas. The fielder at long on is positioning himself and has taken an easy catch. So another wicket goes down for NJS Chargers. Daniel Tahir also picking up a wicket. The captain, thought he has middled that one perfectly, but the fielder at long on have another ideas. Completed the catch, and the 7th wicket goes down for NJS Chargers. The batsman dismissed Saqib Ikhlas. He's moving back into the pavilion. Saqib Ikhlas goes after scoring 12 of 16. NJS Chargers are 105 for 7. विलास स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब अम्यूनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिजाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। Huzaifa Rizwan is the new batsman. Coming in at number 9, Daniel Tahir picking up his first wicket of game. Bowled it down the leg side. The keeper couldn't get that one. It's a slowish outfield. The fielder at short fine leg is running after it. Throws it back to the wicket keeper. Did it hit the bat? The umpire didn't signal as wide. This time he will signal it as wide as it was bowled way outside the off stump. Daniel Tahir bowling his first over of the game and picking up a wicket immediately. And that too of the captain, who was going for that big shot, holding out in the deep on the long on fielder. This time bowling it short, pulled it away. Will go nowhere but at deep long on. Another single at it. NJS Chargers just couldn't pace their chase properly. They started the power play slowly, and after that kept up losing wickets at the regular intervals. Huzaifa Rizwan playing it straight down the ground. The long off fielder will collect that, throw it at the cap keeper's end. He thought there was a chance for an out. 19 overs have been bowled. NJS Chargers are 110 for 7 with just last over to go. वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहां सुकून हो, इत्मीनान। Khurram Shahid, the most successful bowler for Cambridge Strikers, is going to bowl his last over. So far, he has picked up 2 wickets for 25 runs in his 3 overs. This time again, the keeper couldn't gather that. The batsman missed it altogether.
Let's look at the replay. Did he get an outside edge? No, it was a wrong gun. Umpire signal that as bias. Coming down the track, the batsman on that occasion. Has he timed that well? No. The fielder at long on takes another easy catch. Third wicket for Khurram Shahid. The fielder at long on, Talha Malik, took a nice easy catch. Khurram Shahid picking up his third wicket of the night. He has bowled superbly well in this game today. 7 wickets down, NJS Chargers. Saqib Ikhlas. Imran Chawla with the batsman being dismissed. Pretty chasing effort this has been from NJS Chargers tonight. Seems like clearly Cambridge Strikers are going to get those 2 points and they are going to be leading the points table now with 2 victories in this tournament. This time again, turning the ball away from the batsman. He's getting nice bounce as well on this wicket. Last 3 balls of the innings coming up. This time again, bowling it wide and the batsman missing it, trying to go for that cut shot. Huzaifa Rizwan. This time again, going for that cut shot. Does he find the gap? Yes, he has, and this is going to go for another boundary. Welcome boundary this for Huzaifa Rizwan and NJS Chargers. He played that shot, found the gap between the short third man and the point fielder, and timed that well enough to go for the boundary. Last ball of the innings coming up, NJS Chargers 115 for 8. This time going for that sweep shot, completely missing that. He blinded the keeper with that position. The fielder at short fine leg is going to throw it at the keeper's end, and with that, it has been signaled as wide. I think that's a pretty harsh call from the umpire because the batsman was moving inside the crease. Had he stayed in his position, the ball would have hit his legs. Anyways, last ball coming up now. NJS Chargers 118 for 8. This time again moving on the onside, trying to play that aerial shot. Again, it's just going to be a couple for Huzaifa Rizwan. And with that couple, NJS Chargers innings comes to an end and they could only manage 120 for 8 in their 20 overs while chasing 167. Let's look at the batting scorecard. Chaudhary Saif scoring 28 of 30. Munib Javed 20. Shayan Mateen looked good for his 18, but after then it's a sorry looking scorecard. Saqib Ikhlas and Anas Tariq tried to rescue their batting lineup, but it was too little too late. After 20 overs, they could only manage 120 for 8. Let's look at the bowling summary. They started off well. Danish Rehan conceding only 14 runs in his 3 overs. Umar Loya going for 24 runs in his 3 overs, also bowling a maiden. Abdullah Nawab picking up 1 wicket in his 3 overs. Khurram Shahid was the standout bowler, picking up 3 wickets in his quota of 4 overs. Hood Adnan, I think, also bowled exceptionally well, went for 18. Saad Sultan also taking 2 wickets for 12. And Daniel Tahir only bowled 1 over, picking up 1 wicket as well. So here is a smash summary of this 7th game in Gulmohar City presents Youth Friendship League. Cambridge Strikers winning the toss, batting first and putting up a mammoth score of 166. Umar Loya scoring 72 and Umar Taslim scoring 69. Faiz Chaudhary picking up 2 wickets and a wicket apiece for Faizan Shoaib and Bilal Shoaib. In reply, NJS Chargers were nowhere near the chase. Chaudhary Saif, Munib Javed scoring 28 and 20 respectively, with Shayan Mateen also scoring 18. Khurram Shahid, on the other hand, was pick up the bowlers, picking up 3 for 34. Saad Sultan also picking up 2 wickets, and Abdullah Nawab also picking up 1 wicket in his 3 overs. Cambridge Strikers in the end winning by just 46 runs.
We'll go for a short break and we will be back with the presentation ceremony. हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो, ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर न कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो, ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर न कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो, ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी।
इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विजिट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर न कीजिए, आज ही अपने Welcome to the presentation ceremony of the 7th game of Gulmohar City Present Youth Friendship League. Cambridge Strikers easily winning tonight against NJS Chargers by 46 runs. I would like to call upon stage first the losing captain, Mr. Saqib Ikhlas from NJS Chargers. साकिब, अच्छा स्टार्ट रहा पावर प्ले में, 2 विकेट जल्दी चटखा दिए थे, लेकिन उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप लगी उमर तस्लीम और उमर लोया के बीच, जो कि मैच आपसे दूर ले गई। बिल्कुल उमर तस्लीम उमर लोया ने असल में मुझे यही डर था कि ये दोनों उमर जो है ना ये हमेशा मसला करते हैं, तो आज वही हुआ। माशाल्लाह से दोनों की फॉर्म भी लग गई, इन्होंने अच्छा भी खेला और बॉलर्स को अच्छी यूटिलाइज भी किया। बैड लक हमारी तरफ से थी कि बॉल थोड़ी सही जगह से नहीं पड़ी, थोड़ी सी आगे पड़ रही थी बहुत, तो इस वजह से हमारी भी गलतियाँ थी जिसकी वजह से स्कोर हो गया ज़्यादा। साकिब, हमने देखा बॉलर्स काफ़ी टॉवल यूज़ कर रहे थे, ड्यू फैक्टर ने भी बहुत किरदार अदा किया अपने आज के मैच में। बिल्कुल 100% में बहुत ड्यू था। मैंने बॉल मेरे ख्याल से 6-7 के बाद काफ़ी भारी हो गई थी, तो इसी वजह से इनके बाद भी 10 ओवर के बाद स्कोर इतना नहीं पड़ सका, और हमारी क्योंकि बैटिंग सेकंड थी तो उसमें फिर हमको ज़्यादा डिसएडवांटेज हो गया। चलें साकिब, ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग टूर्नामेंट। उम्मीद करते हैं कि पिछला मैच आप जीते थे तो इंशाल्लाह आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। थैंक यू, इंशाल्लाह बिल्कुल। साकिब इखलास द लूजिंग कैप्टन, नाउ द विनिंग कैप्टन साद सुल्तान। साद भाई, काफ़ी वो थे जब शुरू की 2 विकेट्स गिर गई थी, लेकिन बहुत उम्दा खेला उमर तस्लीम और उमर लोया ने 2 विकेट गिरने के बाद। नहीं माशाल्लाह, हम बहुत मिस कर रहे थे उमर लोया की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी टाइम से, और बहुत ही ज़रूरी टाइम पे उसने जो इनिंग खेली। विकेट ये जब दोनों खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि बहुत आसान विकेट है, जबकि इतना आसान विकेट था नहीं। हमारा स्कोर 160 रन बहुत था इस विकेट के ऊपर। हमने बैट बॉल्स को बहुत अच्छा यूटिलाइज़ करा, और माशाल्लाह जिसने उमर तस्लीम उमर लोया ने इनिंग्स खेली वो काबिल तारीफ़ है, और चैम्पियन प्लेयर्स हैं 2 मेरे पास। बैटिंग के बाद हमने देखा कि आपकी बॉलिंग में भी बहुत डिसिप्लिन था, बहुत कम एक्स्ट्रा रन्स कंसीड किए, और फिर रन रेट भी हमने देखा कि 6 से ऊपर आने नहीं दिया किसी भी स्टेज पे। तो ये कोई ख़ास स्ट्रेटजी थी, किसी प्लानिंग के साथ गए थे आप? बॉलिंग माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी है, बहुत एक्सपीरियंस है। एक हमारे प्लेयर उमर चावला जो हैं वो हम मिस कर रहे थे, लेकिन हमारे बॉलर्स ने बिल्कुल ऐसे दिखाया कि जैसे कोई है ही नहीं। और एक बात यहाँ पे थी कि उमर चावला 12 के 12 जो है उमर चावला है, लेकिन नहीं, यहाँ पे हर कोई अपना नाम रखता है और हर कोई बताना चाहता है कि मैं उससे बढ़कर हूँ, और इन्होंने बॉलिंग पे ये बात साबित करी। और जिस तरह की फील्डिंग एफर्ट्स थी, जय के लड़के खेल रहे हैं माशाल्लाह, बहुत मज़ा आ रहा है खेलने में इनके साथ। आगे भी उम्मीद है कि ऐसे ही खेलते रहें। चलिए साथ, बहुत अच्छा मैच देखने को मिला। अब 2 मैच जीत चुके हैं, टेबल के टॉप पे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि आगे भी अच्छा परफॉर्म करते रहें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Saad Sultan, the winning captain. Now the prize distribution ceremony. The first award is for the best bowler of the match. It's a gift hamper from Me Body Spray and a free meal voucher from Biryani Wala, and it goes to Khurram Shahid for picking 3 wickets. The next award is for the best batsman of the match. It's a ₹1,000 cash voucher from Debonair Saloon, and it goes to Umar Loya. The next award is for the cool player of the match. It's a gift hamper by Medicam and a free meal voucher by Penny Pizza, and it goes to Umar Taslim for his power hitting.
عمر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ یہیں رہیں کیونکہ آپ آج کے مین آف دا میچ بھی ہیں. مین آف دا میچ کا اوارڈ کے لیے گفٹ ہیمپر بائی ایڈمرل اینڈ سوٹ بائی الزہیب اینڈ ₹2000 فرام گل موہر. اندر اگین فار عمر تسلیم. عمر if you can come and have few دو وکٹس جلدی گر گئے تھے, اس کے بعد آپ نے سوچا کہ شروع میں پہلے اسٹے کرنا ہے اور پھر بڑے شاٹس کے لیے جانا ہے, تو اسی اپروچ کے ساتھ گئے تھے یا کچھ اور مائنڈ بنا کے گئے؟ تو یہی تھی کہ شروع میں اسٹے ہی کرنا ہے, جیسے عمر لویا اور ہماری بات ہو رہی تھی اندر کہ وکٹ اتنا برا نہیں تھا, تو ہم نے کہا اگر بیٹسمین یہاں پہ سیٹ ہو جائے تو یہاں رن ہو سکتے ہیں, کیونکہ بریک تو تھا نہیں, تھوڑا اپ اینڈ ڈاؤن تھا کہ بال کبھی باؤنس ہو رہی ہے کبھی بیٹھ رہی ہے. اوور آل پچ اتنا برا تھا نہیں, بیٹنگ ٹریک تھا میں سو کہوں گا. باقی عمر لویا نے بہت ساتھ دیا ماشاء اللہ اس نے, اور الحمدللہ رن ہو گئے. جب آپ لوگ بیٹنگ کر رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا بالکل الگ پچ ہے, اور باقی آپ کے علاوہ شاید کسی نے 30 بھی کراس نہیں کیا, تو دوسری اننگ میں بیٹنگ تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے یا پہلی اننگ میں آسان رہتی ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں بیسکلی تو ویسے ایزی ہو جاتی ہے, لیکن الحمدللہ ہمارے جس طرح بالر نے آج پرفارم کیا ہے فرام ویری اسٹارٹ, تو عمر لویا نے کری, دانش ریحان نے ایکسلنٹ بولنگ کری, اور دوسرا کنٹین میں ہم وکٹ کے ساتھ ساتھ کنٹین کرنے گئے تھے, وہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوا, اور الحمدللہ پھر رزلٹ آپ کے سامنے. چلیں عمر, امید کرتے ہیں ایسی ہی بیٹنگ اور پاور ہٹنگ دیکھنے کا موقع ملے گا اگلی ٹورنامنٹ میں. تھینک یو. That's it from the presentation ceremony. The next match is between Samia Builders and Burj Builder Hawks at TMC ground tomorrow. So see you tomorrow then. प्लॉट की बुकिंग करवाइए, एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का.